करेंगे. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Mr. Lalitji Kalantri. He is the Vice President of Bajaj Steel Industries Nagpur. पूरे विश्व में बजाज स्टील इंडस्ट्रीज़ का जिनिंग उद्योग में बहुत बड़ा नाम है और खानदेश को हमेशा से ही इनका बहुत सहयोग और प्रेम मिला है. I would like to request Mr. Lalitji Kalantri to please express his views. से सभी गेस्ट का हार्दिक दिल से वेलकम करता हूं और सभी गेस्ट, सीनियर्स और खानदेश जिन एंड प्रेस एसोसिएशन मेंबर्स को धन्यवाद अदा करता हूं जिनकी एफर्ट्स के कारण आज हम लोग यहाँ गैदर्ड हुए और मुझे एक मौका मिला है कि मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे सकूं. I would like to give presentation on best ginning and pressing practice to have lowest possible contamination, trash and control moisture in the bell. Cotton, the white gold, is a unique crop. As its every atom is having multiple use, the optimization of each component of it at the processing stage is a sure way, with the latest technical development, is a sure way to add value in total value chain. From fiber we get a cloth, from seed we get a oil, cattle feed in the form of cake or DOC. From tea stalk or roots, we got a biofuel, particle board, Ayurveda medicine, etc. Now ginning. Ginning is a first step in post-harvesting of the cotton, wherein the seeded cotton is removed to remove the lean fiber over seed. There are 4 types of ginning technology available and Bajaj Steel supply all 4 type of ginning plant worldwide. Double roller, single roller, rotobar, sawgen. Now we'll go through the short video about ginning pressing unit. It's a Bajaj standard video. Excuse me. Due to some technical issue, this video is playing here, but it is not playing on the screen. I am holding it for some time. क्या problem आ रहा है? इधर स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रहा है? एक्सटेंडेड वर्क डुप्लीकेट करो. क्या हुआ? अच्छा, बाहर से रन कर दूं? ओके, बेटर है, बाहर से रन कर देता. बढ़िया प्लेयर. मीडिया प्लेयर चलेगा कोई भी. जस्ट नो. ऑडियो 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 लगाया ना. हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी हैं और हमें 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा दिया गया है.
कॉटन जिनिंग और प्रेसिंग प्लांट्स के लिए टर्नकी प्रोजेक्ट लेने के लिए हमारे पास विश्व स्तरीय इंजीनियरिंग सेटअप है। हम है बजाज स्टील इंडस्ट्रीज। इधर जिनिंग प्लांट के अंदर जो भी एडवांस मशीनरीज लगती है वो पूरा जिनिंग का प्रोसेस ये वीडियो के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। बजाज स्टील द्वारा निर्मित बाबा साहेब केदार जिनिंग एंड प्रेसिंग और एवी जिनिंग एंड प्रेसिंग प्लांट है। कपास को ट्रैक्टर द्वारा डिस्पेंसर में डाला जाता है, जिससे आपूर्ति में प्रवाह होता है। हॉरिजॉन्टल प्री क्लीनर अपरिपक्व टिंडों, कृषि अपशिष्ट और रेत को साफ करता है, या कपास, स्टोन एंड हैवी इमेच्योर बॉल रिमूवल सेटअप के माध्यम से भी साफ किया जा सकता है, जो आग के जोखिम को कम करने के अवांछित सामग्री को हटा देता है। फिर कपास बेल्ट कन्वेयर या न्यूमेटिक सक्शन के माध्यम से निर्वहन किया जाता है। सर्वोत्तम सफाई विकल्प के लिए रॉ कॉटन इंक्लाइंड प्री क्लीनर को प्लांट के अंदर जोड़ा जा सकता है। कपास को फिर बजाज कॉटन फीडिंग ट्रॉली सिस्टम या सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रू कन्वेयर द्वारा पहुंचाया जाता है। ट्विन ऑटो रेगुलेटर जो बफर के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार तत्काल कपास की आपूर्ति करता है, जिससे प्रत्येक डबल रोलर जिन को सुचारू रूप से काम करने के लिए पर्याप्त कपास मिलता है। सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रू कन्वेयर के बजाय बजाज कॉटन फीडिंग ट्रॉली सिस्टम का इस्तेमाल सीड कॉटन को निर्वहन करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रू कन्वेयर की तुलना में इसके सीमित फायदे हैं। बजाज डबल रोलर जिन कोमल, लागत प्रभावी हैं और उच्चतम उत्पादकता और बिना बीज के टूटने के साथ सबसे साफ कपास देते हैं। प्राप्त लिंट फाइबर मूल फाइबर की अधिकतम संभव लंबाई और इसकी प्राकृतिक चमक और कोमलता बनाए रखता है। साफ बीज जिन सीड चैनल से गिरने के बाद नीचे जिन स्क्रू कन्वेयर के माध्यम से क्रॉस सीड कन्वेयर, फिर बकेट एलिवेटर और ओवरहेड सीड कन्वेयर के माध्यम से जाता है। ओवरहेड स्क्रू कन्वेयर बीज के भंडारण के लिए कई बिंदुओं में बीज को गिराने में सक्षम बनाता है। लिंट रोलर जिन से इंटरमिटेंट लिंट सक्शन सिस्टम में एकत्र हो जाता है, जो आगे सफाई और कचरा हटाने के लिए एयर सेपरेटर और लिंट क्लीनर के सक्शन से जुड़ा होता है। फायर फाइटिंग और डाइवर्जन सेटअप जले हुए लिंक को शमन टैंक में सुरक्षित रूप से बुझाने में सक्षम रहता है। यह सिस्टम लॉजिकल इंटरलॉक सीक्वेंस में आग के कारण होने वाले नुकसान को रोकता है और फायर सायरन अलार्म देता है, ताकि आग बुझने के बाद साथ तुरंत चालू हो जाए। फिर लिंक को लिंक क्लीनर में ले जाया जाता है, जो जिन मशीनों से एकत्र किए गए लिंक को साफ करता है। नहीं आ रहा ना? लिंक क्लीनर से बेस तक लिंक बेज या न्यूमेटिक सक्शन द्वारा संप्रेषित किया जाता है। लिंट फिर अंत में अप पैकिंग बेल प्रेस या डाउन पैकिंग बेल प्रेस द्वारा गाठियों में संकुचित हो जाता है। बजाज प्रेस किसी भी अन्य आपूर्तिकर्ता की तुलना में अधिक मजबूत है, जिसमें ऑनलाइन ऑयल फिल्ट्रेशन, हीट एक्सचेंजर वाले कूलिंग सेटअप और कूलिंग टॉवर होते हैं। बेलिंग के बाद गाठियों को फिर भंडारण के लिए गोदाम में ले जाया जाता है। दुनिया भर में जहां भी कपास उगता है, वहां हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल, दरवाजे, फायर फाइटिंग और हाइड्रेंट समाधान और प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग सहित जिनिंग उद्योगों के लिए एक स्थान समाधान के साथ सेवा कर रहे हैं। जिनिंग में डबल रोलर जिनिंग, you know it well.
It is used for medium and long stipple and extra long stipple cotton ginning. Single roller is used specifically for long and extra long, but the biggest disadvantage is the productivity is very less, power consumption is high. This is rotobar gin. This is the latest technology wherein the knife is rotary and due to its revolution, it cuts the fiber. And at the periphery of the knife, there is 6 edges instead of 2 edges in double roller gin. So it does a production almost 5 times than the double roller gin. As of now, this technology is proven for slick seed. For fuzzy seed like India, the technology may come in a future wherein this will do the job, this machine, single machine will do the job of 5 machines. This is the saw gen machine. We produce different type of saw gen machine also, up to 25 belts per hour production capacity. These are the different types of saw gen, brush type and air blast type. These are the different types of the baling press. In up-packing baling press, we make press from 5 bells to 90 bells. In down-packing, we make up to 60 bells. Why best ginning and pressing practice? To have the possible contamination, trash, control, moisture in a bell. Since today, selection of a cotton fiber for spinning is made on the basis of the fiber quality. And any damage in the same during the process of ginning reduces the value of the fiber, results in lowering down the value of the textile value chain. The development of high-speed spinning weaving machinery has necessitated requirement for better fiber parameters, and any deteriorations in quality caused while ginning cannot be rectified later. And hence the defect carried forward from from fiber to yarn, fabrics, fashion, and then finally foreign. Thus, further value addition process. So, contamination, trash and moisture is a major issue which need to be addressed in a ginning mill to achieve the 5 years vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to build an India cotton brand value to double the income of the entire value chain, right from farmers to the garment fashion manufacturer. I would like to communicate some interactive presentation now. Whether the contamination in a cotton is on increasing year by year, the probable answer may be, though all the factors contributing to the addition of contamination are identified and lot of efforts are being taken to reduce the same, but still the results are not up to the mark. So, are you agree the contamination is increased year on year, though we are talking on each conference that it should be reduced? Yes. The next question is, will it be viable on long term for spinning mill to make huge investment for removal of contamination at various level year on year? Since you know that in spinning mill, due to contamination, there is lot of rejections of good quality cotton, which will lower down the realization of the spinning mill raw material. So definitely it is no. Next, following are the different type of the contamination cleaner, sorter, analyzer used in spinning process. Contamination sorter at blow room stage, vision shield or manual sorter at carding stage, contamination analyzer at combing stage, BMS vision sliver watch at draw frame and lapper stage, electronic contamination clearing channel or UV light etc. at draw frame and lapper stage. So, whether it is really, the next question is, since in India we do hand picking of cotton. So I would like to ask one question, the hand picking, is it a problem for contamination in India? No, instead it is a boon for Indian cotton that due to hand pick the trash content is very less. So it may not be the probable cause of increasing contaminations. Whether the addition of the extra moisture in seed cotton is benefited? No. Then why the practice of addition of moisture above 50% is necessary? Since something somewhere the peoples are doing it, absolutely not necessary. Due to more addition of moisture during raw cotton stage, it is very difficult to remove the contamination and trash from a cleaning machine. So we should not practice this. Next, should the spinning mill pay higher for cotton having lower contamination? Ginner's answer, yes. Or
Should they handle the same in their premises only? If yes, then they will need a cost, so it is not absolutely recommended by the spinners to do it. It should be done at the first stage itself. So it has become very urgent to analyze why such increase in contamination take place and will it be sustainable for us to run in a long run. International Trade Center broadly classify contaminant in two categories, fibrous and non-fibrous. These are the fibrous and non-fibrous contaminant. Out of this, fibrous contaminant having the buoyancy same as of cotton fiber. So it gets spin very easily with the cotton fiber during the spinning process. So once it gets spinned, it is very difficult to remove out, and there is no chemical process or any other process available to remove out the polypropylene or hair contaminant from the fiber. So this is a very dangerous contaminant. A non-fibrous contaminant normally doesn't comes in a fabrics defect, but it interrupt the process of spinning. And the spinning machines are the very precise machine. If there is any grease or any foreign contaminant like stone or anything, iron particle comes in, it may spoil the machine itself and hamper the production and hence the quality of the spinning process. As of now, normally the people has the attitude of checking everything from the percentage. Supposing the contaminant percentage is hardly 2 gram to 100 gram out of 1 ton of seed cotton fiber. So out of 1 ton, 2 gram is not that much. But it is that much since the contaminant are measured in terms of frequency, not by weight. How much defects you got in per square inch area of the cloths is called frequency. This is the recommended flow sketch of the ideal ginning and pressing plant by Bajaj Steel Industries Limited. Here you can see there's 32 numbers is a sorter machine which sort out all the contaminant between super cleaner and press. So this can be installed in this setup, and there is a filter compactor installed instead of cyclones so that the ginning factory should be dust free. And all the equipment whatever is shown, we will cover it later how it will help in reducing the trash content of seed cotton. This is the ideal flow sketch when we got a machine pick cotton wherein the trash content is more than 50%. It is applicable for foreign. This is Prakash White Gold installed scanning machine setup which is installed after lint cleaner between press, and all the lints is processed through this machine. I would like to answer a few questions. Will it be a ideal solution for ginning mill to install this sorter and get rid of contamination problem? Is it worth or suitable to fit contamination scanner machine post after cleaner before fully packed bale for ultimate solution? Yes, surely yes, but today there is hardly 2 or 3% ginners who does it. So rest 97-98% ginners are not doing it. Why? We'll see the another questions which will clarify it. What is the maximum tonnage per hour capacity of this one contamination machine? It is till date it has reached up to 2.5 tons per hour, provided all conveying and cleaning machinery should be installed in a ginning mill of the recommendatory one. Then only we can achieve 2.5 ton per hour. Otherwise, normally the scanning machine supplier says 1 ton or 2 ton is a maximum capacity. Out of 1 or 2 tons, suppose 2 ton, 2.5 tons of 170 kg bale, how many bale we will produce? Almost 50 bales per hour, not more than 50 bales per hour. So 50 bales per hour needs one contamination machine. So if we want to go beyond this for a higher capacity plant, we'll need its such multiple setup. So the cost of the investment goes very high, since the cost of each machine installation setup is 25 to 35 lakhs based on the technology used like ultraviolet, infrared or photo sensing technology. For large capacity, as I said, we need a more number of machine. So once these ginners get the assurance about the premium from the spinners, if they do it, then only this multiple setup can be installed in a bigger unit. Now,
As I said, contaminations. These contaminations can be removed by mechanical process, gentle mechanical process, not harsh, so that we can remove out all the contaminant to the best extent. These are the equipment is available with the Bajaj Steel. This will remove all the hard particles, stone, sands, kaudi. This is what is removed below this equipment. This dispenser, cotton dispenser, this roll is uniquely designed for entangling all the long contaminant, and being a trash door front open, you can clean it. This spray cleaner which is installed attached to the cotton dispenser hangs the long contaminant like this. So after every shift you can stop it and remove the top door and cut out all the contaminants from this. So it will reduce contaminant to enter into gen machine. This is screw conveyor. This screw conveyor has a perforated trench. So first perforated trench, due to first perforated trench, all foreign contaminant has a gate pass to get filter out from this holes. Here these are the pipes which is fitted below the screw conveyor perforated trench. So all the sand or stones get settled out. And in screw conveyor, in hanger bearing bracket, you will get lot of long contaminant get hanged in conveyor brackets. Like in lean suction system also, it is fully covered. The hopper is close to the machine and it is fully covered. There is no single opening, so no chance of any foreign contaminant in lean conveying circuit. There is fire detection diversion setup. So once the fire took place, it is very easy to dispose of the burn fire. So due to fire detection and diversion problem, there will not be post contaminant due to fire if you install this setup. This is the unique machine which eliminates the requirement for manual leather roll growing process. Normally you saw that in ginning mill, after every 24 hours or 36 hours, ginners has to do the manual leather roll growing process. And if it is not done in a proper way, it will lower down the production of the machine. It will increase the trash content from the lint fiber, and it will reduce the leather roll life itself. One leather roll life is almost 4% of the machine cost. So it is impacting to the maintenance cost also. We'll go through the video now. लेदर रोल जिनिंग मशीन का महत्वपूर्ण अंग है। लेदर रोल पर समान ग्रूव की पिच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो अधिकतम उत्पादन, उच्च गुणवत्ता और अधिकतम रुई के फाइबर की लंबाई को सुनिश्चित करता है और साथ ही बीज को टूटने से बचाता है। आमतौर पर मैनुअल लेदर ग्रूविंग प्रक्रिया में एक समान ग्रूव मिलने की संभावना बहुत कम होती है एवं पिच भी समान नहीं होती है, जिस वजह से फाइबर की निर्धारित लंबाई नहीं मिल पाती। ग्रूव की लंबाई पूर्ण न होने की वजह से उत्पादन क्षमता घट जाती है। मैनुअल रीग्रूविंग बराबर न होने की वजह से कचरा और सीड कट बढ़ जाता है। जले हुए लेदर का कालापन खराब लिंट गुणवत्ता पैदा करता है और कपास फाइबर में लेदर के मिलने की संभावना को बढ़ाता है, और यह खतरनाक धुएं का उत्पादन करता है जो इंसान के लिए बेहद हानिकारक है और यह आपको गंभीर संकट में डाल सकता है। तो अब क्या करें? चिंता न करें, हमारे पास इसका समाधान है। सादर करते हैं बजाज ऑटो इंडेक्सिंग जिनिंग रोल ग्रूवर मशीन, और यह इतनी आसान है कि सर्वसाधारण व्यक्ति भी इसे चला सकता है। रोल के पीछे का हिस्सा बेयरिंग्स के बीच में रखें और सामने का हिस्सा चक में ठीक तरह से डालें। लेदर रोल का सारा भार चक के जबड़े पर तब तक न छोड़े जब तक कि वह ठीक तरह से कस न जाए। सुनिश्चित करें कि रोल केंद्रीय रूप से संरेखित हो। मशीन में विभिन्न लंबाई समायोजन उपलब्ध हैं। इसे रोल लास्ट ईयर ही हमने दिया है और इस साल करीब 10 मशीन का ऑर्डर बुक्स हुआ है। तो आप तक ये मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि कटर सेटिंग की नीचे दी गई प्लेट बराबर से मार्किंग प्लेट से मेल खाती हो और कटर की ऊंचाई रोल की व्यास ऊंचाई समायोजन असेंबली पर लगाए गए पैमाने के साथ से बिल्कुल मेल खाती हो। रोल डायमीटर आप कटिंग डेप्थ सेट कर सकते हैं। मशीन के साथ दिए गए सेंसर हाइट एडजस्टमेंट गेज की मदद से ठीक से एडजस्ट की गई हो। अब मशीन रोल ग्रूविंग ऑपरेशन के लिए तैयार है। पैनल के बाएं और दाएं पक्ष से पावर एमसीबी और कंट्रोल एमसीबी स्विच शुरू करें और नेक्स्ट और सेटिंग टैब प्रदर्शित होने तक प्रतीक्षा करें। आपातकालीन स्टॉप स्विच को घड़ी की दिशा में घुमाकर रिलीज करें। नेक्स्ट दबाएं, फिर ऑटोमेटिक दबाएं।
आवश्यक ग्रूव की संख्या डालें और एंटर दबाएं। अब होमिंग पुश बटन दबाएं और फिर स्टार्ट ऑपरेशन बटन दबाएं। ग्रूविंग प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। फुल लेदर रोल ग्रूइंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं करना पड़ेगा स्टार्ट से एंड तक। नॉर्मल केवल 6 मिनट के अंदर ड्राइवर उत्तम तरीके या से ग्रूव किया गया रोल उपयोग के लिए सिक्योरिटी तैयार हो गार्ड भी जाएगा। इसको ऑपरेट कर सकता है, इतना सिंप्लीफाइड मशीन है। लेदर को रिग्रूव करने के लिए पैनल के बाएं और दाएं तरफ से पावर एमसीबी और कंट्रोल एमसीबी स्विच शुरू करें। नेक्स्ट और सेटिंग टैब प्रदर्शित होने तक प्रतीक्षा करें। आपातकालीन स्टॉप स्विच को घड़ी की दिशा में घुमाकर रिलीज करें। नेक्स्ट दबाएं और फिर मैनुअल दबाएं। इससे मशीन मैनुअल मोड में प्रवेश करेगी और रिवर्स फॉरवर्ड और रोल रोटेट पुश बटन काम लेदर करना रोल शुरू कर देंगे। रीग्रूइंग बहुत बड़ी इन बटनों समस्या की है, सहायता से उसके लिए कटर मोटर पर्टिकुलरली असेंबली को अच्छा घुमाकर ओनर वाला लेदर के व्यक्ति रोल पर लगता है पहले जिनिंग किए मिल गए में। ग्रूव से मिलाएं। किसी दिन अगर वो नहीं है और कोई दूसरा व्यक्ति अगर काट लेता है तो रीग्रूइंग में परेशानी होती है, वो जब ये ग्रूव मशीन पूरी के तरह द्वारा से नहीं मेल खा रहेगी। ले, HMI स्क्रीन पर बैक दबाएं, फिर ऑटोमेटिक दबाएं। आवश्यक ग्रूव की संख्या डालें और एंटर दबाएं। फिर होमिंग पुश बटन दबाएं। यह कटर मोटर असेंबली को शुरुआती स्थिति में लाएगा। अब कटर की ऊंचाई को ग्रूव की आवश्यक गहराई के अनुसार सेट करें और फिर स्टार्ट ऑपरेशन पुश बटन दबाएं। ऑलरेडी कट पाथ को ये 100% फॉलो करेगा। इसमें एक प्रिसाइज मोशन कंट्रोलर लगा रहता है कुछ जो ही मिनटों नॉर्मली में सीएनसी बेहतरीन मशीन में तरीके से use होता है। रिग्रूव किया गया लेदर रोल उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा। हमारे पास इसका समाधान है। Sorry, due to lack of time, I will cover rest of the presentation fast. Trash and contamination removal, it can be removed. Trash means it's leaves, bark, grass, stick, plastic, particle of sand and dust. It can be removed by following pre-cleaner, horizontal pre-cleaner, inclined pre-cleaner with inbuilt vacuum well beneath the grind section, Bajaj impact cleaner, Bajaj super 3 stick cleaner, Bajaj stripper cleaner machine, Bajaj Sawgen extractor feeder cleaner. These are the 8 type of different seed cotton cleaners, and these are the different types of post seed cleaner. Normally in India, number 1, either 3 roll or 6 roll is used, but to enhance the trash removal property, we can install serial number 2, a Bajaj inclined inbuilt vacuum well beneath the grid section type 3 or 6 roll, or Bajaj centrifugal lint cleaner. This 24D lint cleaner is normally preferred in Sawgen, which brings trash content below 0.5%. Moisture is again a critical parameter. For a fiber to have a good strength and length, we need a moisture around 10%. But for the best ginning and cleaning, it should not be beyond 8%. So, for removing out the trash and the contaminant from the seed cotton, necessarily its moisture should be less. So, we can install following dryer, which is installed normally in overseas market for drying the seed cotton so that all the contaminant and trash is removed out. Conclusion, जैसा जैन साहब ने फर्स्ट सेशन में एक बताया था, हमें अपने आप को एक डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। कोई ऐसा कंपल्शन अगर लगाते हैं और कंपल्शन फॉलो करते हैं तो पॉसिबल नहीं होता है। तो कंटामिनेशन और ट्रैश रिमूवल के लिए भी इसी तरीके का कुछ होना चाहिए, और पर्टिकुलरली जो आपका कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्ट है उसके अंदर अदर पैरामीटर के साथ साथ ट्रैश, कंटामिनेंट और मॉइस्चर इसको भी उसमें डालें तो अच्छा रहेगा। तो ये फॉलोइंग कंक्लूजन्स हैं। थैंक यू वेरी मच।